योसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो वे जो भगवान सम्यक संबुद्ध अरहंत स्वखातो येन भगवता धम्मो भगवान के द्वारा भली भांति धर्म सुपटिपन्नो यस भगवतो सावक संघो और भगवान का श्रावक संघ इस प्रकार से मार्ग पर चल रहे हैं। इमे ही सक्कारे ही यथा अर्हं आरोपिते ही अभिपूजयाम तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससंगं। हम उन भगवान बुद्ध धर्म और संघ की करते हैं। साधुनो भन्ते भगवा सुचिर परिनिब्बतो भी। हमारा सौभाग्य कि भगवान को निर्वाण प्राप्ति के बाद भी पश्चिमा जनतानुकंप मानसा आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। इमे सक्कारे दुगत प्रणाकार भूते पटिगण हाथु। भगवान भेंट स्वीकार करें। अमहा कंग दीघरतं हिताय सुखाय। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। करता हूँ। स्वखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। भगवान के द्वारा आख्यात धर्म को नमन करता हूँ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। भगवान के मार्ग को भली भांति प्रकट करने वाले संघ को प्रणाम करता हूँ। हंदमयंग बुद्धस्य भगवतो पुब्बभाग नमकारं करोमसे। हम भगवान की प्रारंभिक वंदना करें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। हंदमयंग बुद्ध अभी उत्थति करें मुझसे। आए हम भगवान की स्तुति करें। यो सो तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो। वे जो तथागत अरहंत और सम्यक संबुद्ध हैं। विद्याचरण संपन्नो ज्ञान और आचरण से संपन्न। सुगतो लोक विदु सुगत और लोक ज्ञाता। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी
भटके हुए मनुष्यों को अनुपम सारथी की भांति संयमित करने वाले, सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा, देवों और मनुष्यों के शास्त्रा भगवान बुद्ध, यो इमं लोकं सदेवकं समारकं स ब्रह्मकं, जिन्होंने इन लोक में ससमणं स्वयं अभिया सच्चिकत्वा पवेदेसी, श्रमण ब्राह्मणों, देव और मनुष्यों के लिए अपने दिव्य ज्ञान से साक्षात्कार कर सत्य को प्रकाश में लाया। यो धम्मं देशेसी आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं, जो धर्म कहते हैं मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी है। सार्थं सव्यंजनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेसी, भगवान ने ये परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य धर्म अर्थ और व्यंजन सहित प्रकाशित किया। तं अहं भगवन्तं अभिपूजयामि, तं अहं भगवन्तं शिरसा नमामि, उन भगवान की वंदना करता हूँ, उन भगवान को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। हंदमयं धम्म अभि उत्थुति करोमसे, आए हम धर्म की स्तुति करें। यो सो स्वाख्यातो भगवता धम्मो, जो धर्म भगवान ने से समझा, संधि को स्पष्ट दिखाई देने वाला है, अकाली को कालातीत है, एहि पास्य को अन्वेषणा को करने वाला है, उपनयी को अंतर्मुखी करने वाला है, पच्चतंग वेदितव्यो वियो ही, प्रत्येक प्रज्ञावान को स्वयं अनुभव होने वाला है। धम्मं अभिपूजयामि, उस धर्म की मैं वंदना करता हूँ। तं अहं धम्मं शिरसा नमामि, उस धर्म को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ। हंदमयं संघ अभि इत्थुतिं करोमसे, आए हम अब संघ की स्तुति करें। यो सो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, भगवान के श्रावक संघ जो कि भली भांति पर चल रहे हैं। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सीधे मार्ग पर चल रहे हैं। याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उसी प्रकार से चल रहे हैं। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अठ पुरुष पुग्गला, चार युगल और 8 प्रकार के आ रहे हैं। ईश भगवतो सावक संघो, ऐसे भगवान के श्रावक संघ हैं। आहुनेयो, भेंट देने योग्य हैं। पाहुदनेयो, अतिथि के योग्य हैं। दक्षिणेयो, दक्षिणा के योग्य हैं। अंजलि करणीयो, और नमस्कार के योग्य हैं। अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्य, में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र हैं। तं अहं संघं अभिपूजयामि, उस संघ की मैं पूजा करता हूँ। तं अहं संघं शिरसा नमामि, उस संघ को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हंदमयं रत्न अत्य प्रणाम गाथा है। योचे एव संवेग परिकीर्तन पाठंच का भणामसे, आए अब हम तेरे रत्न वंदना और धर्म संवेग जगाने हेतु पाठ करें। बुद्धो सुशुद्धो करुणामहर्णवो, भगवान बुद्ध परिशुद्ध और करुणा के सागर हैं। योच अंत शुद्ध नयाण लोचनो, जो अति शुद्ध ज्ञान के चक्षु हैं।
वंदामि बुद्धं अहं आदरेण तं, उन भगवान की मैं आदर से वंदना करता हूँ। धम्मोपदीपो वियतः सत्तुनो, उन शास्त्रा का धर्म दीप की भांति है। यो मग्ग पाक मत भेद भिन्नको, लोकोत्तरो यो च तद अथ दीपनो, जो मार्ग और उसके लोकोत्तर अमृत फल को प्रकाशित करने वाला है। वंदामि धम्मं अहं आदरेण तं, मैं उस धर्म की सादर वंदना करता हूँ। संघो सुखिता भयति खेत संयतो, भगवान का संघ जो धर्म क्षेत्र है। यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको, जिन्होंने सुगत भगवान बुद्ध के बाद शांति का साक्षात्कार किया है। लोलपहीनो आर्यो सुमेधसो, और जिन मेधावी आर्यों ने सभी आकांक्षाओं का त्याग किया है। वंदामि संघं अहं आदरेण तं, मैं उस संघ की सादर वंदना करता हूँ। पुण्यं मया यं मम सब उपपद्दवा माहोन्तु सिद्धिया, मेरे पुण्य के प्रभाव से कोई क्लेश उत्पन्न ना हो। तथागतो लोके उपपन्नो अरहं सम्मा संबुद्धो, लोक में तथागत सम्मा संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं। धम्मोच देशितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको संबोधगामी सुगत पवेदितो, और सुगत भगवान बुद्ध ने ऐसा धर्म निर्देशित किया है जो ले जाने वाला है, परम शांति तक पहुंचाने वाला है, निर्वाण को प्राप्त कराने वाला है और संबोधि का मार्ग प्रशस्त कराने वाला है। मयं तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम, हम उस धर्म को सुनकर ऐसा समझे। जाति भी दुखा, जन्म भी दुख है, जरा भी दुख, वृद्धावस्था भी दुख है, मरणम भी दुखं, मृत्यु भी दुख है। शोक परिदेव दुख दोमनस उपायास भी दुखा, शोक क्रंदन शारीरिक और मानसिक पीड़ा और निराशा भी दुख है। संप्रयोगो दुखो, अप्रियों का साथ दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो, प्रियों का वियोग दुख है। यम्पि इच्छं न लभति तम्पि दुखं, जो भी इच्छा करते हैं उसका न प्राप्त होना दुख है। संक्षिप्तेन पंचोपादान खंदा दुखा, संक्षेप में पांचों तदात्म्य के दुख हैं। सेयथिदं अर्थात रूप उपादान खंदो, रूप खंड से तदात्म्य। वेदना उपादान खंदो, वेदना खंड से तादात्म्य। संज्ञा उपादान खंदो, संज्ञा संघ से। संखार उपादान खंदो, संस्कार खंड से तदात्म्य। विज्ञान उपादान खंदो, इंद्रियों के विज्ञान खंड से तदात्म्य। ये संपर्याय धर्मानोसो भगवा एवं बहुलं साविके विनेति, इनका संपूर्ण ज्ञान धारण करने के लिए भगवान ने बार बार अपने अनुयायियों को इस प्रकार उपदेशित किया। एवं भागा च पनस् भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति, और भगवान ने अपने श्रावकों को बार बार आगे निर्देशित किया। रूपं अनित्यं, रूप अनित्य है। वेदना अनित्या, वेदना अनित्य है। संज्ञा अनित्या, संज्ञा अनित्य है। संखारा अनित्या, संस्कार अनित्य है। विज्ञानं अनित्यं, इंद्रियों का विज्ञान अनित्य है। रूपं अनत्ता, रूप अनात्म है। वेदना अनत्ता, वेदना अनात्म है। संज्ञा अनत्ता, संज्ञा अनात्म है। खारा अनत्ता, संस्कार अनात्म है। विज्ञानं अनत्ता,
इंद्रियों का विज्ञान अनात्म है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सारे संस्कार अनित्य हैं। सब्बे धम्मा अनत्ताति, सारे ही धम्म अनात्म हैं। ते मयंग उत्तीर्ण महाजातिया जरा मरणेन, हम सभी जन्म वृद्धावस्था मृत्यु शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दोमनस्से ही वायासे ही दुख उत्तीर्णा दुख परिता, शोक क्रंदन शारीरिक और मानसिक दुख, निराशा जैसे दुखों से पीड़ित और बंधे रहते हैं। अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुख खंदस्य अंत क्रिया पय्या एताति, आए हम सारे दुख खंड का अंत करने का संकल्प करें। चिर परिनिब्बतोपि तं भगवन्तं शरणं गता, धम्मंच संघंच, हम उन भगवान जो बहुत समय पहले परिनिर्वाण को प्राप्त हुए एवं उनके धर्म और संघ की निर्माण में हैं। तस् भगवतो शासनं यथा सती यथा बलं मनसी करोम अनुपटिपज्जाम, के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का हम यथाशक्ति और यथा सजगता से पालन करते हैं। सासानुपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुख खंदस्य अंत क्रियाया संवत्ततु, और इस मार्ग का प्रतिपादन हमें दूर से अंत की ओर ले जाए। ब्रह्मा च लोकाधिपति सहम्पति, कतंजलि अंधवरम आयाचथ, संतिद्ध सत्ता अपरख जातिका, तेसे तु धम्मम अनुकंपिमं पजम। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassāmi. So last night I was giving instruction on the meditation, mindfulness of breathing. And so as the Buddha, they called it anapanasati, which is just mindfulness of the in-breath and the out-breath. Pretty simple. But of course it has huge as well as a catalyst for insight and liberating insight.
And so much of it is, as in all meditations, and I think this is important to recognize, and from a Buddhist perspective, or from the Buddha's way of approaching things, the particular, I mean, there are certain methods or techniques or ways of applying the mind, mindfulness of breathing, loving kindness, contemplation of death, and I mean there's a huge number. But all of them need, we need to learn how to apply our attention properly with those methods or techniques. And one of the fundamental concepts of in Buddhist practice that the Buddha points to is a quality called yoniso manasikara, wise attention, considered reflection. It has many nuances of explanation or definition. Manasikara is like a directing of attention, and sometimes it might require thought. Sometimes it might require just a stilling of the mind and just being alert and attentive. But it's that applying of attention, and in particular, the yoniso manasikara, so to the root or to the source of things, or being able to bring attention back to the source, back to the root. They're not getting caught up in proliferations or conjectures or getting stuck in just a holding, like a tightening of one's grip on an object, because that is missing the point also. So this balance of considered attention, wise reflection. The Buddha calls it the harbinger of the harbinger or sign of the arising of the Noble Eightfold Path. And the Buddha gives an image in the same way. In the early morning, when one sees the light begin to change, the dawn coming, then it's like the harbinger of a new day. It's a sign of the new day coming. And so in the same way, when we are learning how to direct attention and have that considered reflection, it's a harbinger or sign of the arising of the Noble Eightfold Path. And when coming together of the path factors and being able to experience a cessation of dukkha, freedom from suffering. बनते जी हमको याद दिला रहे हैं कि कल रात हमने सांस के ऊपर ध्यान करने की बात, आनापानसति की बात की थी। बेसिकली वहाँ पे सांस के आवागमन पे ध्यान करते हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, लेकिन इस सिंपल क्रिया का बहुत भारी इम्प्लिकेशंस हैं, बहुत उसके अर्थ हैं, बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस भी हैं कि मुख्यतः दो तरह से, एक तो मन को शांत करना और दूसरा कि वो हमारे लिए इंसाइट के लिए, एक अंतर्दृष्टि के लिए, जिससे कि हम मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए एक कैटलिस्ट की तरह बनना। जैसे सभी ध्यान विधियों में होता है,
भगवान बुद्ध ने कहा कि आप चाहे कोई भी तरीका अपनाई कर लें, और उन्होंने ध्यान मन को संयमित करने के कई तरीके बताए, आनापान का, मैत्री भावना का, मरणानुसति का। उन सब में जो एक मुख्य बात यह है कि हमको सीखना होता है कि ध्यान को किस तरह लगाएं, अपना अटेंशन को कैसे ठीक से लगाएं। और उसमें महत्वपूर्ण जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं भगवान, योनिसो मनसिकारा, मतलब अब एक समझदारी से ध्यान लगाना, ध्यान देना। और कई बार उसको ये भी समझ सकते, उसमें कभी विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी सिर्फ मन को शांत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुख्य उसमें जो शब्द है योनिसो, उसका मतलब है योनि की ओर ध्यान, मतलब रूट की ओर ध्यान, जहाँ से उत्पत्ति होती है उसकी ओर ध्यान देना। और अपने जो भी उसके साथ प्रपंच जुड़ा है उसमें अटकना नहीं है, प्रपंच को देखें और उसमें अटके नहीं। ये जो साफ भाव रहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ लें और उसको बहुत टाइटली अपना अटेंशन करें, वो दैट इज व्हाट इज ब्यूटिफुली पुट इट एज मिसिंग द पॉइंट। मतलब आप समझ नहीं रहे क्या करना है। हमको ध्यान ठीक से रखना है और वाइज रिफ्लेक्शन करना है, हमको विवेचना करनी है, मीमांसा करनी है, ताकि उससे हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो सामने प्रकट हो सके। भगवान ने उसके लिए एक बहुत सुंदर इमेज दी है कि जैसे सुबह सुबह उषा काल में सूर्योदय के समय पे धीरे धीरे लाइट बढ़ती है, तो भगवान ने कहा उसी तरह से जैसे कि हम सीखते हैं कि किस तरह से हमारा ध्यान योनिसो मनसिकार हो, तो हमारे लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है प्रकट होने लगता है। और सारे जो अष्टांगिक मार्ग के बेसिक फीचर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, पाथ फैक्टर्स, और हमको वो दुख निरोध की ओर ले जाते हैं। So we establish attention on the breath, on the experience of the in-breath and the out-breath. That sense of attending skillfully, or skillful attention on the both the sensation of the breath as well as the experience of the mind. How do we respond to it? How are we reacting to it? How are we approaching it? So and that's why I say, like, the Buddha's discourse, Anapanasati, is concerned with both the experience of the body, of feeling, of mind, of phenomena of mind, of dhammas, of mind objects. So that it's that with that wise attention and being grounded in the breath, then you're also attending closely to, well, what are with each in-breath and each out-breath, along with the sensation of the body, what are the particular movements of mind, or the responses of the mind, the mood of the mind, and the characteristics of the experience itself. And holding that with each in-breath and each out-breath. And it gives a doorway into a settling, and it gives a doorway into a relinquishing of attachment, a relinquishing of clinging. जैसे हमारा अपना ध्यान सांस पे ठीक से लगाते हैं, सांस के अंदर आने में, सांस के बाहर जाने की ओर हमारा अनुभव निरंतर रहता है, तो हम समझदारी से ध्यान उसकी ओर देते हैं। तो सांस के आने जाने के साथ साथ और मन में क्या हो रहा है, मन में क्या अनुभव आ रहे हैं, वो भी जानते हैं। और भगवान ने जो आनापान सती का प्रवचन दिया है, उसमें सारी बातें समाहित हैं कि शरीर को, काया को कैसे अनुभव
सांस का आना जाना और उसके ऊपर उचित तरह से, ठीक तरह से ध्यान देना। और हर सांस के साथ, सांस अंदर आ रहा है, सांस जा रहा है, मन में क्या हो रहा है उसको भी जान रहे हैं, मन के कैसे मूड हैं, और इस तरह से एक्सपीरियंस को हम हल्के से रखते हैं अपने पास, उससे चिपकाव नहीं करते। और हर सांस के अंदर जाने में भी सब जानकारी है और हर सांस के बाहर आने में भी जानकारी है। और इस तरह से जो हमारा मन है वो सेटल होने लगता है, शांत होने लगता है, और जो हमारी क्लिंगिंग है, अटैचमेंट है अनुभवों के साथ, किसी भी अनुभव के साथ, वो कम होने लगती है। So the directing of attention to mindfulness of breathing, mindfulness of the in-breath and the out-breath, this quality of yoniso manasikara is, I mean, it has a certain framework, and the Buddha is quite, he actually gives many different, say, frameworks or objects, ways of applying it, but they say the main one that he is using the Four Noble Truths. And what is wise attention? What is unwise attention? And unwise attention is when it's about me, my breath, my feelings, my mind. What was my mind like in the past? What will it be like in the future? What is it even like now? Good grief. And then you get tangled up into the analysis and the conjecture and the proliferations about self, making an identity or an identification, a sense of me entangled with the experience. And all you're doing is breathing in and breathing out, but we make it into an incredible problem. So to that sense of framing our experience in a different light, and that's the function of mindfulness. Mindfulness of breathing, yoniso manasikara, so framing it in a way that we're able to step beyond that. There's a wonderful phrase in the ahangara mamangara mananusaya. The I-making, the mind-making, the underlying tendencies to conceit, in the sense of conceit, not in the sense of puffing oneself up, conceit in the sense of creating an identity of any sort, whether it's sort of inferior, superior, equal comparison. So that stepping back from using that wise attention, considered reflection, so that the experience of the in-breath and the out-breath is this is dukkha. Because if we start creating a problem with the breath, and that's just the member Luang Por Sumedho years ago saying, having a discussion with an English person, and when he was early days of teaching in England, and coming and sort of saying, I can't do mindfulness of breathing, and I can't get it, I don't know how to do it, and I just say, oh well, let's see, what can't you get? I can't. It just seems so impossible to do. Can you? Let's just sit here for a minute. Can you breathe in? I said, okay, yes. Okay, now can you breathe out? So, okay, you've got it. But as soon as that sense of self and I and me and mine and the I,
that once that starts going, it gets extraordinarily complicated, and of course that is dukkha. And just to be able to, oh, this is dukkha, and that's seeing how that works. So that considered reflection allows one to shed and you think, God, there's got to be more to this than that. And there is, but you have to be able to peel back those habits of attachment and proliferation, and be able to learn how to, like contentment, learning how to be content with an in-breath and an out-breath. That wanting mind, the conceiving mind, is always coming up with something else that I should be doing, I should be getting. So just to be able to be present with the in-breath and the out-breath, that contentment, and it doesn't mean you dumbly sit with just, okay, you've got India, Delhi, you probably don't see them much, but I always think of like Ajahn Chah. You see, you're not meditating like a water buffalo, you're applying some investigation and alertness, and it's not dumbly sitting there, okay, waiting for something to happen. It's, you engage with it, but then also being content with because that's so much of our we're pulled into that craving and attachment, and it's so much integral to how our experience of ourself and the world around us is conditioned by that. And that's why mindfulness of breathing, just learning how to pay attention to one in-breath and one out-breath, then it highlights more clearly what those habits of mind are and what we have to relinquish. It's sort of like having I guess even some obviously a dated image, but like a chalkboard or a whiteboard, and if it's nicely cleaned and then you write on it, and you can see exactly what's written on it. But if you keep writing over it and writing over it and writing over it and writing over it, then it's hard to figure out what the heck is there. But and that's what our mind is like. You keep piling on the thoughts, the impressions, the proliferations, the worries, the fears, and just to come back to one in-breath, one out-breath, and you start to see more clearly what that movement is, and then you can get a sense of, that's where I can relinquish, that's where I can let go, or that's where I can put some effort. भगवान ने जो हमको सांस के आवागमन की ओर ध्यान देने की इस बात सिखाई है, योनिसी को मनसिकारा की, उसके लिए कई सारे फ्रेमवर्क दिए हैं, कई सारे तरीके दिए हैं उसके लिए, और उनमें से जो एक महत्वपूर्ण है 4 आर्य सत्यों का फ्रेमवर्क है कि हम ध्यान देते समय क्या इस भाव से ध्यान कर रहे हैं कि ये मैं ध्यान देख रहा हूँ, ये मेरा सांस है, ये मेरा मन है जो इधर हो रहा है, इधर जा रहा है। और अगर इस तरह से हम ध्यान करेंगे तो नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के प्रपंच पैदा होते रहते हैं, और ये जो मैं का भाव है, जो आइडेंटिटी हम बनाते हैं, उससे अटक जाते हैं उसमें, और उसके कारण दुख का अनुभव होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं साधना करने में कि मेरा ध्यान ठीक नहीं हो रहा, मेरा मन इधर भाग रहा है। जो सांस के आवागमन का काम है, योनिसी मनसिकारा का काम है, उसके कुछ शब्द भंते जी ने बताया जो बहुत याद करने योग्य हैं। अहंकार,
ममकार अस्मि माना। अहंकार मतलब मैं का, कारा मतलब करना, क्रिएट करना, मैं का भाव क्रिएट करना, मेरे का भाव क्रिएट करना, और अस्मि माना मतलब कंसीट, एक आइडेंटिटी बना के रखना। तो इस बात का, आइडेंटिटी का मतलब कि मैं इसके बराबर हूँ, इससे अच्छा इन्फीरियर हूँ, सुपीरियर हूँ, या इन जैसा ही हूँ, किसी भी तरह की आइडेंटिटी बनाएंगे तो उसको साधना में दिक्कत आती है, दुख का अनुभव बढ़ता ही रहता है। तो ये सारी आइडेंटिटी से किस तरह से हम हट पाएँ, तो केवल एक सांस आ रहा है और जा रहा है उसको देखें, और जब भी ऐसी आइडेंटिटी बने तो उसको चार आर्य सत्यों के विवेचना में देखें, उसको जांचें उस तरह से। आपने फिर एक उदाहरण दिया कि जब लुंग पोर सुमेधो शुरू में वहाँ इंग्लैंड में सिखा रहे थे ध्यान करना, तो एक साधक आया था कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं टिकता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, आनापानसति तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने उससे कहा, अच्छा तुम बैठ जाओ, और क्या तुम सांस अंदर जा सकता है, तुम्हारा मालूम पड़ता है सांस जा रहा है? कहा एक सांस तो जा ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा बाहर निकालो सांस, मालूम पड़ता है? कहता हाँ निकलता है। तो उन्होंने कहा बस यही तो करना है, और क्या करना है। तो दिक्कत यही होती है कि जब हम उसमें मैं का भाव जोड़ देते हैं तो जो आर्य सत्यों के अनुरूप ही उसमें दुख की भावना जागती है, क्योंकि उसके साथ हम प्रपंच खड़ा करते रहते हैं। तो हमको ख्याल रखना है कि एक कंसिडर्ड रिफ्लेक्शन, वेदना के साथ भी हैं, और इतना ही काफ़ी है। क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं कि सिर्फ एक सांस आ रहा है इसको जानो, एक सांस जा रहा है, तो साधक सोचने लगता है बस इतना ही करना है क्या, और भी तो कुछ करना होगा। तो फिर वांटिंग माइंड की क्रिएशन हो जाती है, कुछ इच्छा, कुछ चाहते मन टिकाए रहना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो बंते जी ने कहा कि जो साधना है वो एक ऐसा नहीं है जैसे एक भैंस होती है पानी में बैठी हुई है और कुछ नहीं उसको होश है, बस बैठी हुई है, उसी पे टिका हुआ है पानी में। अजान चाह जैसे उदाहरण देते थे इस बात का, वो कहते थे कि जो साधना है उसमें रिफ्लेक्शन साथ बहुत आवश्यक है। जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रति सजग रहना, और जो अनुभव हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना सुचारू रूप से, उपयुक्त रूप से, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही मन क्रेविंग में जा रहा है, अगर हम उस पर रिफ्लेक्शन नहीं रखेंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मन में कुछ भाव जाग रहा है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो तभी हम इसको अपने जीवन में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि हम, बड़ी सहज सी बात है कि हम एक सांस आ रहा है उसको जान रहे हैं, एक सांस जा रहा है उसको जान रहे हैं उसका, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ के नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने आपने उदाहरण दिया जैसे कि एक वाइट बोर्ड जो स्कूलों में क्लासरूम में यूज़ होता है, अगर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उस पर लिखा जाए तो ठीक से पढ़ा जा सकता है। और अगर वो पहले उस पर लिखा जाए, फिर और लिखा जाए, फिर और लिखा जाए, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको जो क्या अब लिखा जा रहा है वो पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं इस बात का कि जैसे ही कुछ चित्त में कुछ लिखा जाए, हम उसके प्रति सजग हो जाएं, तो उसमें और लिखा नहीं जाएगा, चित्त हमारा व्यथित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा। तो उपयुक्त विवेचना नहीं कर पाते तो फिर साधना ठीक से नहीं हो पाती। The sutta and got to the section on the mind and talked about the gladdening the mind, the breathe in, gladdening the mind, the breathe out, and is to remind people of that the Buddha's say very clear statement that the happy mind is easily concentrated. That and the next step in the sutta is samadhaham. Say the
concentrating the mind, I breathe in, concentrating the mind, I breathe out. I have a problem with the word concentrating. just again, sometimes the words evoke feelings, and when we're told to, if I'm told you need to concentrate your mind, I get tense, get tightened up, so that sometimes it's translated as calming the mind, I breathe in, calming the mind, I breathe out, settling the mind, I breathe in, settling the mind, I breathe out. It's just sometimes the early translators in the English, they say as a general rule, there was incredible service. But then some words have been sort of really sort of exclude everything else. I just got to concentrate and can't let anything else in, and that's kind of uncomfortable. It's a good. The word samadhi I've always appreciated how it's translated into the Thai language, because sometimes you say, like in Thai language, you just, it's the same words, they just do it because it's about 30% Pali and Sanskrit in the Thai language, and much of it is just plunked in. But then the translation is of samadhi is establishing the mind firmly. That's a nice translation. That's a good description of what we were. So, like, establishing the mind firmly, I breathe in. Establishing the mind firmly, I breathe out. That has a very different feel. And so, it's important to explore these the ways that we relate and what the imagery or feelings that are evoked through the language, because we tend to make assumptions, and it's through that assuming certain, and it's like we assume self. Like when the Buddha talks of attachment, you say like the different types of attachment, clinging, upadana, so that attachment to sensuality, sensual desire. Okay, so attachment to sila paramatta, the sila upatana. There's attachment to precept and practice. So I might say, purity, if I just do this, keep this rule, do it this way, then I'll become pure. That's an attachment, sila upadana. So that, or attachment to views and opinions. And then oftentimes what people assume is say attachment to self. But that actually isn't what the Buddha says. And so it's attavad upadana. So attavad it's not atta upadana. It's attavad upadana. So it's an assumption of self, because there isn't a self to begin with. Then we assume it into being, and then we attach to it, which is even more weird. If you're attached, like sensual desire, it's there. So, and then we attach to it. But sort of like that sense of self, it just isn't there. We assume it into being, and then we attach to it. That's just even more, just perverse, what the mind does to us. So to be able to see that more clearly, and then recognizing with just that sense of again coming back to experience, the in breath, the out breath,
settling the mind, calming the mind. I breathe in, calming the mind, I breathe out. And then with that calm mind, then you can recognize the attachments, the ways that we're overlaying attachment to experience. लुंगपुर हमें याद दिला रहे हैं कि कल रात जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पूरी कंप्लीट नहीं थी, तो कल चित्त का जो सेक्शन था उसमें चित्त को प्रसन्न करना, ग्लैडनिंग द माइंड की बात कही थी, और फिर उन्होंने याद दिलाया कि हमें कि एक प्रसन्न चित्त ही ठीक से कंसंट्रेशन हो सकती है, उसकी ठीक से समाधि हो सकती है। तो फिर बता रहे हैं भंते जी कि अगला स्टेप जो था समाधहम चित्तम, तो सांस को जानकारी लेते हुए सांस अंदर आ रहा है तो चित्त को समाधम चित्तम, बाहर जा रहा है तो समाधम चित्तम। अब ये शब्द समाधम जो है समाधि से आया, उसकी ट्रांसलेशन को लेके भंते जी ने डिटेल में बताया कि किस तरह से परेशानी होती है, कि जो बहुत पहले के ट्रांसलेटर्स थे जिन्होंने काम किया, और वो भंते जी कहते हैं उन्होंने बहुत सर्विस की है इस धर्म के क्षेत्र में, लेकिन कुछ शब्दों का ऐसा ट्रांसलेशन हो गया जिससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे समाधि का ट्रांसलेशन हो गया कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जब शब्द जैसे हो एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना, बाकी सब चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना। तो भंते जी बता रहे हैं कि शब्दों की अपनी एक फीलिंग आती है शब्दों के कारण। तो जब आप कहते हैं कि कंसंट्रेट करो, एक ही चीज़ पर मन रखो, इधर उधर मत जाओ, तो अपने अनुभव से बताते हैं कि उससे टेंशन हो जाता है। जबकि समाधम का एक दूसरे सेंस में ट्रांसलेशन किया जाए, चित्त को शांत करता है, चित्त को इकट्ठा करता है। तो जहाँ हम एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सब स्पष्ट अनुभव में आता है कि अगर हम ऐसा किसी चीज़ पे ध्यान कर रहे हैं और कोई और चीज़ ना आए तो मन शांत नहीं रहता, क्योंकि हमेशा ये भय सा लगा रहता है कोई और चीज़ हमको डिस्टर्ब ना कर दे, हमारा ध्यान उधर ना चला जाए। तो आप बताते हैं कि समाधि शब्द का अर्थ इस सेंस में लेना ठीक नहीं है। तो आप बता रहे थे कई बार दूसरी भाषाओं में, जैसे थाई भाषा में वो कह रहे थे कि उसका ट्रांसलेशन समाधि का जो किया गया था वो ज़्यादा उपयुक्त उनको लगता है, कि वो एस्टैब्लिशिंग द माइंड फर्मली, मतलब मन को ठीक से लगाते हैं। जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं तो मन को उसमें ठीक से लगाते हैं, सांस बाहर जा रहा है तो मन को ठीक से लगाते हैं। कहते हैं इस तरह से जब हम शब्द का ट्रांसलेशन करते हैं तो एक अलग फीलिंग जागती है, एक अलग भावना जागती है कि, और ये हमें भाषा के जो इन्फ्लुएंस है उसके प्रति भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसलेशन के कारण भी हम कभी साधना में हमारी दिक्कत आ जाती है। तो फिर अगला एक जो बात उन्होंने आगे हमें बताई कि अटैचमेंट की, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताया उपादान के बारे में, कि कई तरह के उपादान हमें भगवान ने बताए हैं, कि कामनाओं के प्रति जो काम उपादान है कि हम इंद्रियों के सुख के प्रति अटैच हो जाते हैं। फिर शीलबद्ध उपादान है कि हम अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रिसेप्ट्स हैं, उनके प्रति अटैच हो जाते हैं, कि मैं अगर ये रूल को इतना खींच के रखूँगा तो मेरा मन और शोर हो जाएगा, तो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट उन रूल्स के साथ जोड़ देते हैं। फिर जो उपादान है वो दृष्टि से, विचारों से, अपने ओपिनियन से, व्यूज से हो जाता है। बता रहे हैं हमें कि भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया अत्तवाद उपादान, कि हम सेल्फ के वाद जो है, अत्ता का जो वाद है उसके प्रति अटैचमेंट है। मतलब वियर्ड कि कोई चीज़ है नहीं, पहले हम उसको अज्यूम करते हैं और फिर उसके प्रति अटैच हो जाते हैं। तो जो जब हम उसका ट्रांसलेशन इस शब्द का ये करते हैं, कामिंग द माइंड, मन को शांत करना, तो सांस आ रहा है और मन को शांत कर रहे हैं, सांस जा रहा है तो मन को शांत कर रहे हैं, और जब चित्त शांत हो जाता है तो उससे हमको जो उपादान है, जो अटैचमेंट है, वो उसको जानने में सहूलियत होती है, क्योंकि शांत चित्त से ही हम अपनी अटैचमेंट्स को जान सकते हैं। कहाँ हमारा चिपकाव है, कहाँ उपादान है, वो शांत चित्त में ही मालूम पड़ सकता है। So the last step in the section on the mind is
freeing the mind or releasing the mind, I breathe in. Freeing the mind, releasing the mind, I breathe out. And of course that is that freeing or releasing, say on an insight level, that releasing from attachment and clinging. On the samadhi level, sort of freeing or releasing from the hindrances, the neighbouring, the things that cloud the mind or obstruct the mind. So that it works on both levels, releasing and freeing, so that there is both an experience of calm, as well as of insight. But the main thing is that sense of being willing to release that and to free the mind from that which is obstructive. And again, that's where that attentiveness or wise attention, considered reflection, when one sees, it's like the Buddha says over and over and over again, I teach only two things: dukkha, cessation of dukkha, and to be able to see those areas where there is constriction or a feeling of discontent. Mind, I breathe in, releasing the mind, I breathe out. So it's something that we do on a moment-to-moment basis, on an in-breath and out-breath basis. It's not sort of some grand project. Sometime in the future, I will release my mind. It's a present moment practice. चित्त के सेक्शन में आखिरी स्टेप मंत्र जी बताते हैं आता है, हम चित्त को फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं। तो बता रहे हैं कि उसके दो आयाम हैं, एक इनसाइट के आयाम पे, एक अंतर्दृष्टि के आयाम पे, और दूसरा समाधि के आयाम से। अगर इनसाइट के आयाम से समझते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने चित्त को जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं, चिपकाव हैं, उपादान हैं, उनसे रिलीज़ करते हैं, उनसे अपने को हटाते हैं। और समाधि के लेवल पे अगर कहते हैं तो उसका मतलब है हम अपने चित्त को, जो निवरण हैं, जो 5 निवरण हमारे मन चित्त को भ्रमित कर देते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं, उनसे चित्त को हटा लेते हैं। तो दोनों ही स्तर पे रिलीजिंग और फ्रीइंग का जो बात है, जो चित्त को मुक्त करने की बात है, वो दोनों समाधि के लेवल पे भी और इनसाइट या विपश्यना के लेवल पे भी ऑपरेट करते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि हम चित्त को उन सब अटैचमेंट्स, उन सब चीज़ों से, उन सब मेंटल फैक्टर्स से रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे चित्त को ऑब्स्ट्रक्ट करें, जो चित्त को रोकते हैं फ्री होने में, मुक्त होने में। और हमें याद रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बार ये कहा है कि मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें सिखाता हूँ, कि दुख है और दुख से मुक्ति है। तो हमारी साधना के दौरान भी हमको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या इस समय साधना करते हुए दुख हो रहा है, क्या मैं बेचैन हूँ, क्या मेरे को संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ वांटिंग, कुछ चाहता हूँ। तो जब हम इस बात का ध्यान करेंगे तो उनको रिलीज़ कर देंगे तो चित्त हमारा शांत हो जाएगा, चित्त में अंतर्दृष्टि हो जाएगी। और ये काम जो है मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस पे होता है, कोई ऐसा ग्रैंड प्रोजेक्ट नहीं है कि हाँ बहुत सालों बाद ध्यान करके मेरा चित्त मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मोमेंट टू मोमेंट, एक सांस आया चित्त को फ्री कर रहे हैं, एक सांस गया चित्त को फ्री कर रहे हैं, उस बात को हमें समझ के ध्यान करना चाहिए। So the last section in the Buddha's discourse on and instructions on mindfulness of breathing is the Dhammānupassana, about the contemplations around Dhamma, or phenomena, or objects of reflection, objects of insight. So that the first one, and they say all of them is like aniccanupassana, so that contemplation
anicca, of impermanence. Viraga-anupassana, contemplation of dispassion. Nirodha-anupassana, contemplation of cessation. Pati-nissagga-anupassana. Pati-nissagga is relinquishment. Incorporate any of these in the early part. I mean, this is like learning the structure so that you can learn to apply it in different times when it's appropriate, when it's going to be helpful, when it's going to be useful, and particularly these aspects of contemplation for insight and relinquishment are even from the very first knowing that one is breathing in a long breath, knowing that one is breathing out a long breath, when it's informed by dispassion and relinquishment, it's a very different experience than the experience of trying to force the mind onto the breath and hold it there forever. It just isn't. It's a very different experience. So that understanding that whole structure and recognizing what it's for, that contemplation of anicca, of inconstancy, of uncertainty. I mean, it has different flavors. The word anicca is some impermanence, changing nature of things, the arising and ceasing of things, but also the sense of as Ajahn Chah would oftentimes use, not all the time, but oftentimes use, that sense of it's unsure, uncertain. It's a flavor of impermanence. And I think oftentimes what happens when just use, again with language, it's sort of we say impermanence, and then we end up watching impermanence and watching arising and ceasing, and it's an object out there. But it's important that it's, how do we feel about it? How do we experience it? What's the heart feel with when there's something impermanent or that anicca? And then it's seeing that unsure, uncertain nature of change, and that's how we feel, how we experience it. So that's an aspect of that directing of attention in different ways, so that there is an increased clarity and ability to relinquish and let go. आनापान की सती सूत्र के अंतिम सेक्शन जो है धम्मानुपश्न वाला है कि हम किस तरह से जो भी फिनोमिना हैं, जो भी चीज़ें वो धम्म हैं उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी ओर कैसे ध्यान दें। ये तो विवेचना के ऑब्जेक्ट हैं इनसाइट डेवलपमेंट के, तो उसमें कई आयाम आते हैं, अनिच्चानुपश्ना, विरागानुपश्ना, निरोधानुपश्ना, पटिनिस्सग्गानुपश्ना। तो अनिच्चा जब तो हम सब समझते हैं, अनित्य के भाव, विराग का मतलब एक राग रहित होना, निरोध मतलब अनुभव करना कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो समाप्त हो जाती है, और पटिनिस्सग्गा बताते हैं कि रिलिंक्विशमेंट की उसके प्रति चिपकाव को समाप्त करना। कई बार ऐसा लगता है कि ये अंतिम सत्र है इसका, आनापान सती का ये 12वां स्टेप है या 14वां स्टेप है, तो ये तो उसके पहले तो इसका कोई महत्व नहीं है, 12 स्टेप पूरे हो जाएंगे तब करेंगे। तो भंते जी याद दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को हम पहली स्टेज में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कि जैसे उदाहरण के लिए भंते जी ने बताया कि जब हम देख रहे हैं कि ब्रेथ इज लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब गहरा लंबा सांस है कि छोटा सांस है, वो भी अगर हम हमारे एक डिस्पैशन से इन्फॉर्म्ड हो, मतलब उसके प्रति हमारा चिपकाव ना हो,
और हम उसको अटैचमेंट ना हो उस भाव परिस्थिति में भी कि हाँ लंबा है कि छोटा है, तो भी हमारी साधना और अच्छी तरह से हो सकती है। इसी तरह से एक और उदाहरण दृष्टांत दिया, जो अनिच्छा शब्द है उसको कई तरह से ट्रांसलेट किया जाता है कि बदल रहा है, और दूसरी बात ये यहाँ उत्पन्न होता, उदय होता है, व्यय होता है। लेकिन एक और उसका जो आयाम अजान चा कई बार बताते थे कि वो अनसर्टन है, वो श्योर नहीं है। तो मनते जी फिर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि लैंग्वेज का कितना भारी इम्पैक्ट होता है, कि ट्रांसलेशन से कितना इम्पैक्ट होता है। तो हम जब कोई चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए, तो जब हम कहते हैं अनित्य है तो हम उसको बाहर की ओर देखते हैं, ये चीज़ है और इसको हम जान रहे हैं कि उदय हो रही है, व्यय हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी अंदर की ओर ध्यान दें कि इस उदय होने को और व्यय होने को हम कैसा महसूस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो अनसर्टन है, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, पक्का विश्वास नहीं है। तो इस कारण से वो भाव भी हमको अनुभव पे आता है। तो हमारा अटेंशन अगर हम ठीक से ध्यान देंगे तो देखेंगे कि उसके विभिन्न आयाम हमारे सामने आ जाएंगे। केवल एक सांस को जानने में, आने में और जाने में सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। So with mindfulness of breathing and directing our attention to the aspects of insight, that impermanence and dispassion, and the willingness to let the mind cool and settle. I mean, that's another way of translating viraga. It is fading away and letting things fade, and so much of say the problem of our mind is we don't let things fade away. We want to be stimulated. We want to we want to be. We want to experience, and on a certain level, it's just very natural. But when it's compulsively done, then there's this. We invest a certain passion, and of course, then we want to gain, to get, to be out of it, and then that just keeps the cycle of complication and frustration going. So that willingness to, because then when things are impermanent and uncertain and changing, the reality is that there is a fading away already, which we tend to disregard and then look for something else and just keep me going and so give me another hit of something. And so that sense of being willing to allow that there's like things to fade, and this is similar with the cessation. It's a letting a thought, and that's sometimes one experiences a thought or a feeling, and to make it conscious in terms of, and this is where, especially with mindfulness of breathing, just learning because the breath is very neutral, and then to be attentive to a particular thought, and then watch it fade or watch it go to cessation, toward its ending, and again, what happens oftentimes is that compulsive nature of desire, then oh my God, it's ending. I've got to have something else. I've got to prop it up somehow. And it's not so conscious, but that's when you're watching and attentive and alert to it, you start seeing, oh, that's what we keep doing. So that learning how to be again kind of gladdened and peaceful with that fading away and cessation.
And sometimes, say the word cessation, oftentimes it's like annihilation, which is not, it's not the same type. I mean, it's actually a hard, because there is a cessation and ending. But that nirodha, like dukkha nirodha, or even say like in the teachings that the Buddha gives on dependent origination, so that say with the cessation of ignorance, there's a cessation of consciousness, cessation of consciousness. And you think, oh, it's just sort of this, with annihilation of ignorance, and there's the annihilation of consciousness. That, well, it's not really the feeling. It's more like, as it ceases, what is there, and what is that? Is this quality of knowing, of clear knowledge, of understanding, and we can be, that can be there. We don't have to prop it up. We don't have to force it to be there. But that's the nature of the mind. And then as things, that sense of cessation is also, there's other ways of translate, alternative ways of expressing that. So like when, so they say as desire, because often they say with the cessation of desire, there's a cessation of clinging, and so as through the dependent origination teachings, and cessation of when a problem and me and my desires, so I can get rid of them, and I don't have to bother with them again. But then that sets up a cycle of more desire, more clinging, more attachment to identity. But then it's sort of, when it's no longer a problem, when I don't make a problem of this, then it doesn't sort of carry on. And it's again, language is it's helpful to learn to play with language. And this is also where this yoniso manasikara, that's wise attention. And when we bring up, ceasing, cessation as a word, and we think, that conditions the mind in a particular way, and we can, but it can also open doorways to a sense of space. Ceasing, and then it's a new possibility. There's all sorts of possibilities of spaciousness and awareness. So it's just learning how to, again, with each in-breath and each out-breath, you're learning how to work with the mind, and learning how to work with how, again, just not getting too distracted. There's dukkha, cessation of dukkha. Okay. Don't forget the direction. And I think that's also where the sense of relinquishment is so important. I know this I'll wrap it up for today. The sense of relinquishment and letting go. It's releasing that sense of self, sense of me, and the various views, opinions, proliferations that arise from that. That mindfulness of breathing is a doorway into and the tool for experiencing both the calm of the mind as well as the liberating insight of freedom from dukkha.
आगे जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि धम्मा कृष्णा की चर्चा हो रही थी, उसमें आगे बता रहे हैं कि हमारे जो ये सत्र है ये इनसाइट डेवलपमेंट की और उसका ध्यान है। और जो शब्द हमने इस्तेमाल किए थे जैसे विराग शब्द था, उसका ट्रांसलेशन किया था, एक और जो अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन किया जाता है फेडिंग अवे, मतलब वो अपने आप अस्त हो रहा है, अपने आप समाप्त हो रहा है, चीज़ फेड हो रही है। और उसको हम उत्पन्न हो रही हो फेड हो जाएगी, वो अस्त हो जाएगी, उदय हो रही है तो व्यय हो जाएगी। और अगर हम उसको एक प्रॉब्लम बना देते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो अनुभव होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सांस आ रहा है जा रहा है, वो रुकता भी है, बीच में रुक जाता है, तो फिर हमारा मन रहता है अब किसको पकड़ के रखें, क्योंकि सांस भी तो रुक गया है। तो ये जो हमारी टेंडेंसी रहती है चीज़ों को किसी न किसी आलम्बन को पकड़ के रखने की, वो हमारे लिए साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन शुरू करता है। और हम ये जानते हुए भी कि चीज़ें अनित्य हैं, फिर भी चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ तो बना रहे। तो वो जो भाव रहता है कि हम जानते हुए भी उसको मानते नहीं हैं, उसके अनुसार आप साधना नहीं करते, तो फिर मन में बेचैनी होती रहती है कि सांस रुक गया तो क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए मन के लिए आलम। तो अगर हम इस बात को हृदयंगम कर लें कि जो अनित्य है वो अनसर्टन है, वो बदलेगा ही, वो जाएगा ही, तो जो मन के अंदर ये तनाव सा पैदा हो जाता है वो कम हो जाएगा। और ये इसी तरह का दृष्टांत बंदे जी ने सेसेशन के ऊपर लेके दिया कि फेडिंग अवे सेसेशन। कई बार हम सेसेशन को अनाइलेशन की तरह समझते हैं कि इसको मुझे ख़त्म करना है, तो उस कारण से भी एक अलग उसका तात्पर्य हो जाता है कि चीज़ें अपने आप समाप्त हो रही हैं प्रकृति के नियमों के हिसाब से, और दूसरा कि मुझे उनको समाप्त करना है। तो ये एक साधना में दिक्कत खड़ा करता है, हमारे लिए अंतर्दृष्टि बनाने में दिक्कत खड़ी करता है। जो सांस है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और इसको देखना और फिर इसके सेसेशन को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही भाव रहता है कि कहीं ना कहीं तो ध्यान देना चाहिए। उसी बात को आप उन्होंने और पुनरावृत्ति की उस बात को समझाने के लिए। तो इसी तरह से जो शब्द निरोध है, जिसका सेसेशन ट्रांसलेशन किया जाता है, या दुख निरोध की बात की जाती है, या प्रतीत्य समुत्पाद में कहा जाता है विद्या के निरोध की बात की जाती है, संखार निरोध की बात, विज्ञान निरोध की बात, तो उसको भी अगर हम एनाइलेशन की सेंस में ले लेंगे तो देखेंगे बड़ा अजीब सा लगता है कि अविद्या का एनाइलेट कर दो तो संस्कार एनाइलेट हो जाएंगे, संस्कार एनाइलेट हो जाएंगे तो विज्ञान एनाइलेट हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट द सेंस इन विच द बुद्धा वांटेड। भगवान ऐसा उसका तात्पर्य नहीं था कि उसको समाप्त करना है। तो उसके उन्होंने अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन बताया, जैसे कि जो हम जब उसमें प्रतीत्य समुत्पाद में कहते हैं कि तृष्णा के निरोध से उपादान निरोध होता है, और उसमें निरोध को अगर हम उस सेंस में ले लें कि उसको समाप्त करना है, और एक और उसका तात्पर्य लें कि वी डोंट मेक इट इनटू ए प्रॉब्लम, कि जो निरोध है उसको उस सेंस में समझने की कोशिश करें। तो जो हम कहते हैं सेसेशन ऑफ डिज़ायर, वो कहते हैं डिज़ायर इज़ नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम, कि जो हमारी तृष्णा जाग रही है हम उसको एक परेशानी के रूप में ना देखें कि मुझे तृष्णा जाग रही है, क्योंकि दिक्कत यही होती है उसमें मैं और मेरे का भाव रहता है, ये मेरी तृष्णा है, ये मेरी तृष्णा जाग रही है, ये नहीं जागनी चाहिए। तो जो अटैचमेंट है, उपादान है, वो परेशानी करता है। तो उससे उदाहरण दे रहे थे कि अगर हम एक अल्टरनेटिव समझ लें उसकी सेसेशन की, उसको एनाइलेशन की सेंस में भी ना लें, लेकिन ये लेंगे हाँ, जो जब जैसे हम कहते हैं कि तन्हा निरोध, उसको हम समझें कि तन्हा जो है हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रही, ठीक है, जाग रही है, देख लिया, तो उसका एक तात्पर्य ही अलग हो जाता है, वो चित्त को शांत करने में मदद करता है। तो बता रहे थे कि जो योनिसो मनसिकार है वो इस सेंस में भी हमको देखना चाहिए कि उसकी सेसेशन शब्द की जैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हर सांस के साथ सांस आ रहा है, रुक रहा है, तो सेसेशन हो गया,
सांस जा रहा है, बाहर आ रहा है, रुक रहा, तो सेसेशन हो गया। तो किस तरह से हम यूनिसो मनसिकार की मदद से किस तरह से मन के साथ काम करना है वो ठीक से समझें, और अंततः हमारा मुख्य जो हमारी डायरेक्शन है साधना की वो ठीक रहनी चाहिए कि दुख है और दुख का निरोध होना चाहिए, दुख का समाप्ति होनी चाहिए। और उस सेंस में भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो भी अनुभव हो रहा है उसको हमको यू टू रिलिंक्विश इट, उसको प्रति चिपकाव नहीं रखना है। जो बार बार बनते जी बताते हैं, भगवान बताते हैं टू लेट गो, वो बात हमारे हमेशा सामने रहनी चाहिए। और वो लेट गो हर चीज़ के लिए, जो हमारे ओपिनियन हो, हमारे विचार हो, हमारी मन की स्थिति हो, हर एहसास हो, आ रहा है तो जाएगा भी और जा रहा है तो रुकेगा भी। तो अगर हम ये कुछ फ्रेज इस तरह से ठीक से याद रख लें तो जो आनापान है, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग है, वो दोनों ही काम करता है कि हमारा चित्त को शांत करता है और इंसाइट के लिए भी काम में आ सकता है कि जो अंतर्दृष्टि है, जो हमारी प्रज्ञा है, वो पुष्ट हो सकती है। So before we request Bhante for permitting questions, I think we should all fold our hands and acknowledge the teaching and thank Bhante. Dhamma kathaya sadhu param namaste, sadhu 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 anumodam. Thank you. Can we have any questions, your permission? Yes, if there are any questions. Questions, अगर हो पूछ सकते हैं। My question is, when you talk about anapan, breathing in and breathing out and looking at the mind and the feelings, is it through sensations, or how do we look at it? And can we look at it with you for 5 minutes? How actually do we look at the feelings and I mean, one is the word. I mean, because also again, thinking of language. As soon as you say, "How do I look at it?" you've already managed to distance yourself from it. Sort of, it's an object out there that I'm going to look at, and so. You know, it's important to sort of recognize what the habit of the mind is, and that's why the Buddha uses it, comes up in the, say, experience of the body, experience of feeling, experience of the mind itself. The verb that the Buddha uses, the pati samveti. So experiencing the mind, sensitive to the body, sensitive to the, so it's sort of like being inhabiting the experience, and that's what mindfulness is a key for helping to what's the experience of pleasure or discomfort? What's the actual feeling of the mind? What's the mood of the mind? Is it spacious? Is it contracted? And so that inhabiting the experience and recognizing it, so that when we can start to see, are we adding dukkha to it, or are we not? Is there is dukkha not is it not a problem?
So that's the and with mindfulness, then one is able to say recognize more clearly without that projection of what one thinks what should be, one is fearing that it might be, and sort of all the added layers of experience that we tend to. So it's like coming back to that simple experience, simple sensation, and then just recognizing it. So it's a point of investigation, or a point of contemplation. How are you investigating the mood when you merely observing it go in and go out? Yeah. So how are you investigating the mood? How are you supposed to investigate? Yeah, see, the thing is again, language is sometimes a bit difficult to as that word, like the word I introduced at the very beginning, yoniso manasikara, as like wise attention, considered reflection. And so as soon as we say reflection or investigation, we tend to assume that we're thinking about it. And then attending closely to what the experience is, and or as I say, that patisangveti, experiencing, inhabiting the experience. Is it making sense? Yeah, not very clear. And how does that, with the breath, when you said there is dukkha and letting go of the cessation of dukkha, so in one breath you're even supposed to observe it, you're supposed to investigate it, and also look at isn't Yes. One single breath? Yes, yes. Well, the thing is that so you're not going to get tested on this. You don't have to complete the experience. And so the anchor that the Buddha points to is something that's very close to us. We're always breathing. It's sort of like, I remember one time Ajahn Chah talking to a lay person, and there's I don't have enough time to meditate or practice or keep all these precepts and learn all these teachings, and I don't have enough time for all of that. And Ajahn Chah, do you have time to breathe? And of course we always have time to breathe. So the breath is so it's that using, that coming back to that very basic human experience of we breathe in, we breathe out, and using that as a vehicle for gathering attention. And from that point, then we can start to notice and recollect and you've got to do it all in one in-breath. But it's you've got an anchor as a point of investigation, or a point of recognition of what those patterns are. आपने प्रश्न पूछा कि आनापान में जब कह रहे हैं कि सांस आ रहा है जा रहा है उसको जानकारी करनी है, और फिर मन की स्थिति क्या है, वेदना क्या है, तो क्या ये सब मन की स्थिति वगैरह सब शरीर की संवेदना से देखनी है? तो बंते जी ने जवाब दिया कि ये
लैंग्वेज का एक जो भाषा का जो इम्पैक्ट होता है वो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप कहते हैं कि मैं कैसे देखूं इसको, तो जो आप चीज़ देख रही हैं उसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया और आप अलग हो गए, तो उसमें एक हियाटस पहले ही क्रिएट हो गया, गैप पहले ही कितना हो गया, मैं और मेरे का भाव अलग पहले ही आ गया। भगवान जब हमें कहते हैं शरीर के बारे में, वेदना के बारे में, मन के बारे में या धम्म के बारे में, तो शब्द इस्तेमाल करते हैं पटिसंवेदी, मतलब जो अनुभव हो रहा है उसके प्रति सेंसिटिव है, अनुभव के प्रति सेंसिटिव है। क्या मैं अनुभव को पूरी तरह से देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, क्या मेरा अनुभव है, वो सुख का है कि दुख का है, मन का मूड क्या है, वो मन जो है वो बहुत संकुचित हो गया है या बिल्कुल ब्राइट है, फैला हुआ है। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान कर रही हूँ, तो देखते हैं क्लियरली कि क्या मेरे मन में ये भाव है कि ध्यान ऐसे होना चाहिए या कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये सब जो मन में विचार चलते रहते हैं, उथल पुथल चलती रहती हैं, उस सबको अनुभव करना है, उन सबको पहचानना है, उन सबको जानना है। तो जो प्रश्न पूछा जाता है कि बाद में कि कैसे हम मूड को इन्वेस्टिगेट करें, कि बेसिक आइडिया जो भगवान ने दिया है, बेसिक जो मूल मंत्र है यूनिसो मनसिकारा, कि हम प्रॉपरली अटेंड करें, समझदारी से अटेंड करें, समझदारी से उसके बारे में विवेचना करें, उसकी मीमांसा करें। कि और ऐसा नहीं है कि इसमें थिंकिंग करना है, लेकिन थिंकिंग बंद करना भी नहीं है। अगर थिंकिंग हमारे सोचना अगर हमारे को अटेंशन को डायरेक्ट करने में हेल्पफुल है तो वो भी उचित है। और लेकिन बेसिकली जो भी अनुभव हो रहा है उसके अंदर पूरी तरह से उसको अनुभव करना है। बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया भंते जी ने, पटिसंवेदी, विच इज इनहेबिटिंग द एक्सपीरियंस, तो उस अनुभव को पूरी तरह से जो भी हो रहा है मन में या शरीर में या चित्त में, उसको ठीक तरह से अनुभव कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि क्या इससे इस उत्तर से मदद मिली, तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत। तो फिर भंते जी ने फिर कहा कि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि सांस भी देखिए, फिर फीलिंग भी देखिए, फिर दुख भी देखिए, तो ये सब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे हो जाएंगी। तो आपने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक पूरा सारी चीज़ों का एक कोर्स पूरा करना है, ये एक एंकर की तरह यूज़ करना है, ब्रेथ को एक एंकर की तरह यूज़ करना है कि हमारा मन उस पर टिका रहे। लेकिन जब जो चित्त की स्थिति को देख रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, लेकिन एक एंकर भी हमारा है कि मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो कई बार लोग लगता है कि ये सब इतने सारे काम करने के लिए तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया अजान चा का कि एक गृहस्थ आए थे उनके पास, कहने लगे मेरा बहुत समय नहीं है ये साधना करने का और शील के बारे में सोचने का, चिंतन करने का। तो उन्होंने उनसे यही कहा कि तुम्हारे पास सांस लेने का समय है। उस फर्स्ट एक उन्होंने उत्तर दिया होगा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि बस वही सांस आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी करना ही सफिशिएंट है। वही है एक हम एक व्हीकल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारा अनुभव हो रहा है उसको हम और कॉम्प्लिकेट ना करें। जो हो रहा है उसको जान रहे हैं, सांस आ रहा है और जो हो रहा है उसको जान रहे हैं, तो उससे हमारा चित्त धीरे धीरे शांति भी हो जाता है और फ्री भी हो जाता है। Maybe one more question, we'll have a break. एक और कोई प्रश्न? My question is, when you are observing the breath, a certain memory or a thought arises in the mind when the mind is quite calm, and you don't realize that I think you've gone into the dream world and you've fallen asleep, and there is the feeling that you're not sleeping also, and you can feel the breath, you can feel the body, you can feel the sensations, as well as you can observe the thought and the mind. But then after a little while you realize, no, I'm actually sleeping. Now, how do you tackle a situation like that? And no, that's great, because it's
especially after we've been meditating for a while, years, and we get really good at drifting off. This is what happens. So that's, but that's also where for me, and different people will approach it differently. But I find the body such a helpful anchor because it's tangible. Because the mind, on a certain level, we can convince ourselves of just about anything. So it's like Ajahn Chah sort of said, he said, you know, one of the fastest ways to enlightenment is to look directly at the mind and say, liar. Because it's just coming up with these stories all the time and tricking us, fooling us. So I've always found, in my own experience, I've always found that the body, the kind of posture of the body, the kind of feeling of ease or constriction in the body, the energy of the body, a very good anchor or reminder or mirror of supporting clarity and a clear mind. So to me it's a good readout of what my mind is doing. If my body's starting to slump or starting to, then you realize, oh, my mind is, you know, it's wandered off, it's drifted off. So I've tended to use that mindfulness. Feeling a balance. Is it balance as I breathe in, breathe out? Is there a kind of a bright energy there, or is it a kind of a dull energy? And so I've and as I said, different people will use different things, but that's certainly what I've tended to rely on, is because it's I'm a very literal person. And so that says, okay, back to the body. And so I find it it's anchoring, it's settling, as well as there's this plugging into that feeling of, oh, okay, I can release this and relinquish it, and then move into a spacious quality of mind as well. Okay, that's how. Oh, we have a translation. आपने प्रश्न किया कि सांस को देखते देखते कई बार पुरानी कोई याद आ जाती है, कोई विचार आता है, तो एक तरह से उसी में लोट परोट लगाते हैं, एक तरह के ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, और कुछ देर बाद पता चलता है कि मैं तो सो ही रहा था. तो ऐसी स्थिति को कैसे हम हैंडल करें? तो बंते जी ने जवाब दिया कि जब हम कई वर्ष तक ध्यान करते हैं तो इस तरह से मन जो ड्रिफ्टिंग में काफ़ी सुलभ हो जाती है हमारे लिए, कि मन ड्रिफ्ट हो जाए, इधर उधर चला जाए और विचारों में खो जाए. तो इसको हैंडल करने के लिए कई लोग अलग अलग अप्रोचेस हैं. तो बंते जी बता रहे हैं कि मेरी जो तरीका है कि जो शरीर है, काया है, उसको एक बहुत अच्छा एंकर है, एक अच्छे एंकर के रूप में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि विचारों के बारे में तो कोई अंत नहीं है. अजान चाह बताते थे कि अगर सबसे तेज़ जो शीघ्र मुक्ति का रास्ता है, उसमें ये कहो कि चित्त को देखो और उसको कहो कि तुम झूठे हो, क्योंकि चित्त जो है हमको भ्रमित बहुत करता है. बंते जी बता रहे थे कि मेरे लिए जो है इस ऐसी परिस्थितियों में जब मन बहुत इधर उधर ड्राउजीनेस की तरफ या ड्रिफ्टिंग हो रहा है, तो शरीर का जो है कैसी स्थिति है, शरीर का पॉस्चर कैसा है, पॉस्चर जो है वो चैन से हैं कि बेचैन हो रहे हैं, कि कोई तनाव है, तो वो एक बहुत सपोर्टिंग एंकर की तरह काम करता है. क्योंकि जो मन है वो निराकार होने के कारण उसको देख पाना
कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। शरीर आकार है, उसका एक फॉर्म है, तो उससे एक टेंजिबल चीज़ है जिसको कि हम जिस एंकर बनाया जा सकता है। तो बंदे जी ने फिर कहा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा यही तरीका है कि शरीर के ऊपर ध्यान दें और देखें क्या शरीर झुक रहा है, स्लम्प हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा मन भटक रहा है, और फिर उसको सजग होके पॉस्चर को ठीक कर लें और फिर दोबारा बैलेंस ले आएँ। बेसिकली हमारा चित्त जो है वो सुंदर है, ब्राइट है, या डल हो रहा है, ढीला पड़ रहा है, उसको धीरे धीरे धीमा हो रहा है, तो उससे शरीर से उसका बड़ा भारी रिलेशनशिप रहता है। तो जब भी चित्त के अंदर कुछ स्लॉथ या टॉर्पर या झुकाव, ये चित्त जो है हल्का पड़ने लगे, सजगता उसकी कम होने लगे, धीमी पड़ने लगे, तो शरीर के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो उससे दोबारा से उसको एकाग्र करने का काम कर सकते हैं, दोबारा से सांस की ओर ध्यान देने का काम शुरू कर सकते हैं। Okay, we'll have a bit of a break and then come back for sitting meditation.
With all respect and gratitude, Venerable, I would like to ask a question. My question is related to the middle path. I have basically it's at two levels. One is a bit superficial and deeper level. Middle path conflict that I'm following at my place is that is middle path a constant or a variable? Like often I have been picked off that you are overdoing a thing or underdoing it. This is follow the middle path, the Buddha's path. Now, for me, something maybe my for something my affinity might be more. For something it might be less, or my ability to do something could be more. So there is no comparison with the other person. And is that I mean, am I not understanding the issue, or is it just that because I am able to do less or more, my middle path is different from the middle path of the other person? Then another thing that often I come across, like we read suttas or posts in the Facebook, I have read that Buddha was very particular about practice, that he always told monks, his sangha, to practice as much as possible. Even during Parinibbana time, he was praising the monk who was busy meditating. So, a stage come when there is a sense of urgency. So, at that time, are we breaking the middle path? I mean, are we being extreme? So, these kind of small conflicts, they keep coming every now and then, and I don't have an answer to that. I don't know if I do either. I mean, one of the things is to recognize that they say the purpose of the middle path, and one there's a middle way of practice, and there's also a middle way of teaching, sort of middle way of view, and but when we say a middle way, it doesn't mean that it's just sort of you take the worst and the best and you split the difference and you got a middle way. That's really not how it works. It really is in terms of the middle way for the cessation of dukkha, for relinquishing of dukkha. So that you have to be paying attention to your experience and the result of the application of that middle way, and then also some at different times within your practice there are different ways of practicing a middle way, so that there, I remember one, for quite a few years, I put a tremendous amount of effort into trying to make different adhitanas, and it seemed like a good way, and then and it seemed like a middle way in the sense of, okay, this sense of urgency was very strong, and that sense of and it was really helping. And then it started to get cluttered. And then I remember one year being with Ajahn Chah on a period of retreat and for several months, and that period of time, that vasa period, my adhitana was to not make any adhitanas. And that was a middle way, and it was a really good balance. It was very helpful because it was sort of like I was needing that kind of tangible adhitana, but then in order to find a balance, and it was, okay, I need to step back, and that didn't mean that I continued to not ever determine anything.
So it's like there's always this attention to, well, what's the result of that? What's the fruit of that? What's the experience of that? And you're always having to adjust it and be attentive to is that dukkha, cessation of dukkha. And so in order to do that, you have to be bringing the attention inwards, and you have to be alert to the how it affects the heart, and so that makes it very. This is a here and now teaching. This is present in this present way, and it's for each wise person to experience for themselves. So that we need to be attentive to that, and that middle way is a guideline because of the tendency of the mind to go to some sort of extreme, whether it's in terms of actual practice or in terms of view, in terms of or attachment to a particular teaching. And you see, these are ways that the mind tends to get caught and lose that balance. And when we say middle way, it's also, a good that sense of there's a balance, or in the a way that it's expressed in the Thai language, and that Ajahn Chah would oftentimes, the idiom that he would use was it's just enough, just right. And and then you say, well, what's that mean? But it's really important that that's okay. It's just enough, just right for the cessation of dukkha. ये अंतिम प्रश्न जो रह गया था, बहन ने पूछा था कि जो हम मध्यम मार्ग की बात करते हैं वो क्या सबके लिए एक ही है या अलग अलग है। और कई बार लगता है कि मैं जो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ, कभी लगता है कम है, और अलग अलग लोगों की अलग अलग एबिलिटी है, तो मेरा मिडिल पाथ दूसरों के मिडिल पाथ से अलग होगा क्या। भगवान बुद्ध की शिक्षा में कई बार हम पाते हैं कि जितना साधना कर सकते हो करो, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, निरंतर साधना करो, तो क्या वो मिडिल पाथ में जब माना जाएगा कि वो मिडिल पाथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्या। तो हमने उत्तर दिया कि हाँ, वो मिडिल पाथ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक बात समझ अगर हो कि इसका उद्देश्य क्या है, मिडिल पाथ का उद्देश्य क्या है, तो मिडिल वे चाहे प्रैक्टिस का हो चाहे टीचिंग का हो, उसका उद्देश्य अगर हम अपने सामने रखेंगे तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। पहला तो आपने कहा कि मिडिल वे का ये मतलब नहीं है जो सबसे बुरा है और सबसे अच्छा है उसका बीच का उनके बीच में कुछ जोड़ लें, थोड़ा अच्छा कर लें थोड़ा बुरा कर लें। मिडिल वे का मतलब है कि जो मध्यम मार्ग वो है जिससे कि दुख की अंत हो सके, दुख का निरोध हो सके। तो इसके लिए हमको प्रतीक्षा अपने अनुभव की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे क्या मेरा दुख कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। और अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें मिडिल वे कही जाएंगी। अपना उन्होंने उदाहरण दिया कि कई वर्षों तक मैंने बहुत एफर्ट करता था एक अलग अलग तरह के अधिष्ठान बना के, और वो ठीक लग रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक पास में तो मुझे लगा कि अब मेरा अधिष्ठान ये होना चाहिए कि मैं कोई और अधिष्ठान नहीं करूँगा। तो जो भी परिस्थिति, जो भी डिसीजन हमको दुख मुक्ति की ओर ले जाए, तनाव से मुक्ति करे, वो ही एक मिडिल वे होगा। उसका मिडिल वे का एक ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिकल है वो है कि बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस। और वो तभी होगा जब हम जो हमारी साधना का रिजल्ट आ रहा है उसकी ओर भी ध्यान दें कि हमारा दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उस अनुभव के आधार पे ही हम मिडिल वे को
ट्यून कर सकते हैं कि मिडिल वे हुआ या नहीं हुआ। और इसलिए हमारा ध्यान अंदर की ओर रहेगा तब हम मिडिल वे को ठीक से जान पाएंगे। सामान्यतः मन की एक आदत होती है कि वो अतियों में जाता है, या एक इस तरफ एक अति में जाएगा कि बहुत कम एफर्ट ही ना करें, दूसरी अति में जाएगा तो बहुत एफर्ट करेगा। और कई बार किसी व्यूज़ के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, प्रैक्टिस के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, किसी टीचिंग के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, तो वो दुख का ही कारण बनती हैं। तो इसलिए हमको जो साधना का जो फल मिल रहा है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा मन फिर चिपक रहा है किसी बात से, किसी व्यू से, किसी टीचिंग से। तो बैलेंस लाने की आवश्यकता है। आप बता रहे थे कि थाई भाषा में जो अजान चाह उसका ट्रांसलेशन करते थे कि यही काफ़ी है, यही ठीक है। तो अब ये क्या ठीक है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से मेरे दुख की समाप्ति हो रही है, दुख का निरोध हो रहा है। थैंक यू।
Yes, yes. And then people, if anybody does have offerings, are welcome to come forward.
invite Ajahn Kevali to give a Anumodana reflection. God. I'd like to express our Sangha's Anumodana for all your kind support and the practice that we shared over the last few days, and express some reflections and share some of the inspiration of all of us coming together here. Because it is not such an average occasion, actually. It took quite a long time of preparation and getting to know each other from the beginnings of first meeting in Thailand to coming all the way here for our Sangha. And I would say I am deeply touched by the whole feeling of the group, and also by the very auspicious feeling of being in India. This is special for all of us, maybe not for you, but I was thinking about how to compare this. It is very meaningful to be in the place where the Lord Buddha was born and found final liberation from dukkha. And we are all of us are a later generation, we must say, and there's been various developments that possibly obstruct this direct connection, whether one comes from Germany, Thailand, or from India, who in some way were very far away from the Buddha. And in another way, we're very close. And I think we need to keep this conscious connection in our hearts and nourish our practice with this direct feeling of being close to the Buddha. And I can share how much a feeling of a special opportunity this is for myself and our teachers, Luang Por Passano, Luang Por Jundee, Ajahn Moshe, and Tankunakaro, and our Anagarika. And so more or less, all of us have been practicing in many ways, trying to find a relation to the Lord Buddha in our hearts, and for many years, and particularly the Sangha here. We have taken on the monastic life in Thailand, myself coming from an even further away place, and many others in the monastery that we come together in Thailand, whether it's Wat Pah Pong or Ajahn Chah or Wat Pah Nanachat, the international one. We have come from various directions and various different lifestyles and various closeness or distanceness to a genuine Buddhist culture, and we all found something in this very teachings, and particularly in the monastic setting, that Luang Por Chah, Luang Por Sumedho were confident enough to take on and bring to life in a way that is apparent for us coming to see it from outside, and gradually getting into what is this monastic life, what is this monastery, what is this being a monk, what is this being a Buddhist, and gradually it nourishes our faith more and more. And I personally wouldn't have expected to be able to go back to the heartland of the Buddha's sasana. I think when I first got the chance to go to India, I was in robes maybe for 2-3 years, and we had the chance to go on pilgrimage, and with Ajahn Jayasaro, who was so kind to take a few junior monks along on his trip. So I had done part of my homework as a young monk, and learned all the chanting and all the
various like etiquettes, like we do, like similarly to all of us learning how to say keep the form and practice according to the say rites and rituals, one can say, or the say sasana piti, the forms, the ceremonies, and also the words of the Buddha we have memorized, for example, in the chanting, and we have done our homework in trying to educate ourselves in what does it mean to be a Buddhist, what does it mean to practice Buddha Dhamma. And so when I had had the chance to be with this group going on a pilgrimage, it was my turn to chant the monks' training rules, the Patimokkha, which we do in Pali, and it's quite a long chant, as you may know, and of course I'm nowhere near any proper pronunciation. I've got a very much of a German accent. Many of us may have a Thai accent. Some of us have a Lao accent because our monastery is located close to the Lao border, and so we don't. Very touching that we at least use the same tools that the Buddha recommended to use, particularly for monks. The Patimokkha is a very important tool because it defines us in a conventional way as like on this noble search of liberation in the form that the Buddha outlined for his disciples in a very clear way. So the Patimokkha is very dear to the heart to all of us here. So we had the Patimokkha Day coming up. And my duty was to chant the Patimokkha on the next day when we went down to Sanchi, which already thinking about it, again, my hair stands on end. I would have never expected this, taking on the ropes as a young German guy looking for peace of mind, and then I was rehearsing, like trying to brush up my memory after all the excitement and all the sitting there under the Bodhi tree and without any concerns. I was trying to do my homework in a conventional sense. It's quite a thing to really do a recitation without stuttering or without losing the plot. It's quite a long feat of, I would say, concentration as well, and letting go at the same time. It's a funny mixture, how to make a recitation like this. And so I was rehearsing this silently, walking up and down, walking meditation, perimeter of the Mahabodhi Jedi, and kind of curious about what is he doing and what am I doing. And for some reason we didn't exchange any words or so, but there was this feeling of if he knew like what kind of words I was trying to rehearse right now, wouldn't that be cool to have an exchange? And yeah, like for us, like Tibetan monks, they're just like the Indian people. They live in the Himalayas. The Buddha was born on the foot of the Himalayas. He's somebody who's like the real thing. He's kind of a maybe possibly even the Sakyan clan or some, you know, like in my imagination, I felt like envying somebody who's born right there in India, in the Himalayas, and I was there trying to do it by the ceremonies, by the template, by the tools, and I thought that would be interesting to have this exchange, or it would be maybe even inspiring for him to know that, like, there's this guy that looks like a Westerner. He's actually reciting the words of the Buddha that kind of outline our whole endeavor of becoming monks together. But we never really talked, but I was very inspired and feel like privileged that the tool that we have in our tradition that comes from Thailand is an original tool, and that we can use that. And there was this wholesome sense of, at least I'm
I'm equipped with the right tools, and if only I could use it well. And wouldn't it be inspiring if we were to throw this all together and see how it works, if we got this backwind of being in the right place, being the right person, and using the right tools. And still it's a dream to somehow work on this fascination with, we all have this connection to the Buddha, and we all have these tools. In Delhi, right here, the Buddha may have passed through this place. Who knows? It's not too far away. It's very, very close. And the other day we visited the relics of the Buddha, which are enshrined in our National Museum. And it is just very obvious a connection to try to work these things out together and live on this fascination. We're all later generations. We're all somewhere obstructed through like our worldly lives, or through our nationality, or through our living conditions or so. But the tools are still there, and some of us have used them to a certain extent. I know you've practiced meditation a lot, and place to reside as take some time until the first Indian bhikkhu emerges. But it's a bit of a dream to share this, and it's also not only the monks or the particular bhikkhu that goes forth then, but it could also be the very inspiring, touching opening up of this connection for everybody that's in the monastery, everybody who's meditating there, and everybody who's participating and sharing this this joint venture of making the using the original Buddha's tools in a very close, direct way to the Buddha, which I think all of us are uplifted by and are nourished by. And this is more than our private struggles of the meditation, whether we should use this and that object, whether we should swap postures, or whether we should kind of think about these technical terms or so. It's more coming from the heart. There's something very archaic and intuitively touching about the fact that we're in India, in the land of the Buddha. And I just like to express my anumodana for making this happen, and for joining our efforts here from various different directions, different places, different lives and lifestyles, and trying to bring it back to the original tools, which of course nobody really knows. My Patimokkha chanting at that time was definitely a German accent, as I said, and we'll bring in some of the Thai accents, and I'm very fascinated to hear the Hindi accents in the chanting. So if we throw it all together and live from this like faith that is not conditioned by the particulars, but like nourished from the heart and from the direct connection to what all of us understand and explore and feel that the Buddha was teaching, I think we can make something very beautiful appear in this group, in this location, and possibly in the future in a monastery in somewhere in India. So this is not meant to rush it or to say it has to happen or so, but it's just a real fascination and a real source of faith for myself, and I know for Luang Por Passano, Luang Por Jundee, Ajahn Moshe, and Tankunakaro as well. And so far the feedback I got from the international sangha, starting in new monasteries, many of us are skeptical. Many of us say, "Come on, Kevali, you got enough to do. Who's going to do this?" And yeah, like
if it was somewhere like, say, yeah, we have like monasteries all over the world already, like in various attempts to kind of make the Dhamma happen in these various areas, and one could say, no, that's too much now. And but for India, I haven't heard a single one saying, no, don't do this now. Everybody says, oh, let's see. Interesting. I think we have this shared faith and connection, and let's nourish it. And it also means to learn how to use the tools together. And I see this coming together here. We've kind of like benefited very much from Luang Por Passano's and Luang Por Jundee's experience, and how to use the tools of practicing the Dhamma directly in a more say a broad way than a particular technique, and there's much to be said about how to integrate it within our life here in present day India, here in present day Delhi, and it's just the beginning of learning to use the tools, whether one is monastic or whether one is a lay person, whether one is like in a, say, center or outside on the in town. There's lots to learn and to explore, but we're making the beginnings, and we're sharing and trying to nourish it from this common faith, and the wholehearted wish and anumodana for all our efforts in with all the contributions that so far have been made, and I feel have come to a very nice preliminary conclusion. And with this, like, this is the last full day today. We're still here a lot, but I just like to say already that I think it is very auspicious, and like to express again our wholehearted blessing and wish to make this flourish and grow for the benefit of all of us. And a monastery in the future, we know, is just a place for so many different people. And like you have in Wat Pah Nanachat, for example, you have people from the marketplace or from the paddy fields, and then you have got people from Bangkok, from abroad. You've got some of the most wealthy people and some of the people that live directly from what they plant with their hands. In the monastery, there's school kids, there's old people. So I hope that everybody can find a place in the future development of our group here, the Aranya Vihara Trust, and Anumodana. आजान केवली ने अनुमोदन का शुरुआत की कि आज अपने अनुभव की बताया, अपने फीलिंग्स के बारे में बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भारत में आए हैं हम सब लोग, और एक जगह है कि जहाँ पे हम सब मिले हैं, और ये जो भी आयाम जो भी यहाँ पे इवेंट हुआ है, एक बहुत वन ऑफ इवेंट नहीं है, इसके पीछे काफ़ी प्रिपरेशन हुई। लोग यहाँ से थाईलैंड गए, मिलना हुआ, और ये सब उस सब के बैकग्राउंड एफर्ट से संभव हो पाया। और हम सब के लिए बहुत महत्व की बात यह है कि हम ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ भगवान बुद्ध रहे थे, और यहाँ आके ऐसा महसूस होता है कि इस देश में आके कि हम भगवान बुद्ध के काफ़ी नज़दीक हैं। और हम सब लोग लुंग पोर पसन्नो, लुंग पोर जुंदी, अजान केवली, अजान मोशे, वेनरेबल गुनाकारो और नागारिका अर्पण, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कि यहाँ हम आ पाए, और इस तरह से ये जर्मनी से हूँ, तो वहाँ पे सब लोग अलग अलग जगहों से आते हुए भी एक तरह के सूत्र में बंध जाते हैं, जो भिक्षु संघ का सूत्र है। और उसके
हमारे लोगों के आने के लिए कारण लुंग पोर चा, लुंग पोर पसन्नो का जो शुरू का योगदान है वो हमें सबको यहाँ खींच के बुलाया है वहाँ। और धीरे धीरे हम सब ने सीखा कि क्या एक भिक्षु बनने का क्या मतलब और किस तरह से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कई उसके आयाम हैं। एक आयाम ये भी है कि किस तरह से जो नियम हैं हमारे भिक्षु संघ के उनको फॉलो किया जाए, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो अपना उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जब मैं अभी यंग मॉन्क था 2-3 साल पहले ही, 2-3 साल ही हुए थे मुझे, तब अजान जयसारो के साथ पिलग्रिमेज का मौका मिला था। तो उन्होंने मुझे अपने साथ लिया था भारत की जो धर्म यात्रा के लिए, और उसकी तैयारी के रूप में हमने सारे चैंटिंग्स और एटिकेट, सारे प्रतिमोखा ठीक से पढ़ा, सब उसकी तैयारी की और याद किया उन सबको। तो बेसिक उद्देश्य था कि क्या हम एक बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हैं और मुझे यही था कि मुझे यहाँ इतने सब लोगों के सामने प्रतिमोख का चैंटिंग करनी होगी, उसकी तैयारी करनी होगी। और मेरा एक्सेंट शुद्ध है कि नहीं है। मेरा तो जर्मन एक्सेंट जैसा है, कई लोगों का थाई का एक्सेंट होता है, कई जो, क्योंकि हम लाओस के बॉर्डर पे हैं, कईयों का लाओ का एक्सेंट है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यही ओरिजिनल तरीका है चुनने का, लेकिन ये टूल हमारे वही हैं जो भगवान बुद्ध ने दिए थे। और इसी बात से मन में बहुत मोह जागता है। हम सब लोग एक नोबल सर्च के लिए यहाँ आए हैं, एक मुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए आए हैं। और जो भी टूल्स भगवान ने दिए वो हमको बहुत प्रिय हैं। प्रतिमोखा जैसे एक है वो बहुत प्रिय है। और हम उस ट्रिप के दौरान मेरा चांस तब आया जब हम सांची पहुँचे थे, वहाँ पे मुझे प्रतिमोख करने का अवसर था। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने देखा कि एक तिब्बतन मॉन्क भी वहाँ पे अपने जो प्रोस्टेशंस वो करते हैं वो कर रहे थे। तो उसको देख के भी मन में बड़ा मोह जागा कि ये लोग ये तिब्बत के हैं, हिमालय के रीजन के हैं, और भगवान बुद्ध भी हिमालय की घाटी में ही उत्पन्न में पैदा हुए थे। तो हालांकि हम लोगों में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग्स रही मेरी उनके प्रति, और कि ये भी उसी प्रदेश के हैं जहाँ भगवान, उसी एरिया के हैं जहाँ भगवान बुद्ध हुए थे। और वो अपनी सेरेमनीज कर रहे हैं, अपनी चैंटिंग कर रहे हैं। मेरे मन में आया था कि हम उनसे बताएं कि मैं एक वेस्टर्नर हूँ और फिर भी वही मार्ग फॉलो कर रहा हूँ जो भगवान बुद्ध का है, जो वो फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ इस विचार के ही मन में इतना मोह जागा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं वही है जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है, वही ओरिजिनल टूल्स हैं। तो ये जब यहाँ भारत में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उचित स्थान पे आए हैं जहाँ की बुद्ध की भूमि है। और चाहे हम किसी भी तरह की साधना, उनके बताए हुए साधनाओं में से कुछ भी करें, विपश्यना करें कि आनापान करें कि कोई और विभिन्न तरह के कर्मठान रखें, लेकिन सबकी महत्वपूर्ण बात है कि हमें सबको ये विश्वास है कि हम भगवान के द्वारा दिए गई शिक्षा का पालन कर रहे हैं। जैसे अब अभी हम कल रिलिक्स को गए थे तो वहाँ जाकर भी म्यूज़ियम में बहुत मोह जागा था कि ये वही रिलिक्स हैं उन भगवान बुद्ध के जिनके की शिक्षा हम फॉलो कर रहे हैं। और हम सब लोग के मन में इस बात का भी मोह रहता है कि एक भिक्षु संघ है जो कि एक उदाहरण पेश करता है ताकि जो संसारिक जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। और वही टूल्स जो भगवान बुद्ध ने दिए थे अभी भी अवेलेबल हैं साधना करने के लिए। और हमें खुशी है कि ये अरण्य विहार ट्रस्ट जो है वो एक कोशिश कर रहा है कि एक मोनेस्ट्री बनाई जाए जहाँ भिक्षु आके रह सकें। और हम सब लोगों को बहुत अत्यधिक प्रसन्नता होगी जब भारत से ही कोई एक भिक्षु इमर्ज होगा और उसमें यहाँ ज्वाइन करेगा और हमारे से एक भारत का जुड़ाव हमारे संघ से ठीक से हो पाएगा। एक तो हम सब लोगों के साधक हैं, साधकों के मन में अपनी जो प्राइवेट हमारे साधना के स्ट्रगल्स हैं, साधना की कठिनाइयाँ वो चलती रहती हैं कि मैं ये साधना करूं, ये वाला आलम्बन लूं, कि इस टेक्निक को फॉलो करूं। लेकिन जब हम भगवान बुद्ध के गुणों की ओर, उनके कंट्रीब्यूशन की ओर, उनके संग की ओर देखते हैं तो वो सब चीज़ें
गौन हो जाती हैं और मुख्य बात ये आती है कि ये सब भगवान बुद्ध की शिक्षा है और उन्हीं का दिया हुआ मार्ग है और उन्हीं के टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात याद करके ही बहुत बोध जागता है और हम अपनी साधना को नरिश कर पाते हैं। से लुंग पोर जुंदी से, अजान मोशु से, कि हम सब बहुत प्रसन्न हैं यहाँ आके आपका भगवान के प्रति श्रद्धा देके और ये धम्म संवेग देके। तो ऐसा हम आशा करते हैं इस सब को देख के कि एक मोनेस्ट्री विल टेक शेप। तो अंत में काफ़ी बातें वही दोबारा रिपीट हुई तो कि अपनी प्रसन्नता जान केवली ने व्यक्त की कि उनके और सब जितने भी बनते आए हैं उन सबको बहुत फीडबैक बहुत अच्छा है। दे आर फील वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न है यहाँ आके और हम सब लोगों के जो एफर्ट को वो अप्रिशिएट करते हैं, साधुवाद देते हैं, अनुमोदन करते हैं। आशा करते हैं कि एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ भिक्षु आके रह सकें और फिर भिक्षु जब रहते हैं तो उससे जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान है या बहुत बड़ा नेता है, उन सबको एक स्थान मिलता है जहाँ पे कि वो भगवान की शिक्षा को प्रतिपादित होते हुए देख सकते हैं। अंत में बनते ने फिर हमको अनुमोदन एक्सप्रेस किया एंड आशीर्वचन कहे कि हम सब लोगों के एफर्ट जो हों सफल हों इस डायरेक्शन में। So we'll offer a formal blessing. Yat Varivaha Pola Palipolendi Sakaran Evameva Yathotinang Petanang Upakapati Ichitang Matitang Tumhan Kipameva Samichato Sope Porendu Sangapa Gandho Pandara Soyandha Mani Chotira Soyadha